विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थितिं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसप्रभुगुणमग एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निगन्तुं मधुकैटभो नमः। श्रीदेवी माहात्म्यम् आत्मसमर्पणं स्वरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः। स्वरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः। स्वरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः। पूर्वभागं कवचं न्यासक सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ अस्य श्रीदेवी कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् श्रीमहालक्ष्मीदेवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्रीमहालक्ष्मी प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। मार्कण्डेय उवाच यत्कुक्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दशृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीश द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रादि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गदोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता चरणं गदा न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यन्ति सर्वदुःखक्षयङ्करी यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृत्तिप्रजायते प्रेतसंस्थादु चामुण्डा वारागी महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सिकिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणसौपाट्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुतं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुतं त्रिशूलं च
शार्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवतां दक्षिणे वधुवाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रदिश्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवारिणी रक्षेदुदीक्षां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे जाग्रदस्तातु विजयास्तादु भृष्टदग अचिता वाम बाष्वेतु दक्षिणे चाबराजिता सिगामुद्योदिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमकण्ठा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुकन्ता च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे सामृदकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी खण्डमध्ये च चण्डिका गण्डिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके कामाक्षि शिपुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च भृष्ट्वं चेदनुर्धरी नीलग्रीवापगिष्कण्डे नलिकां नलकूपरी कट्कधारिण्युभौ स्कन्तौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षेत् नलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी ह्युदरे शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनादा च मेन्द्रं च गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् जानुमध्ये विनायकी कुल्पयोर्नारसिंही च पादभृष्टे मिदौजसी पादाकुली श्रीधरी च पादादस्थलवासिनी नगान्तं श्राकराली च
केशां चैवोत्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावशा मांशान् अस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूटामणिस्तथा ज्वालामुखी नगज्वालाम् अभेत्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यान समानो दानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमङ्करी रक्षेत् विजया सर्वदस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्राणं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्राचलाभश्च विजय्य सर्वकामिगः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यक सङ्क्रामेश अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यक कवचेनावृतपुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानाम् अपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिशन्त्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेत् वर्षशतं शाक्रम् अवमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकातयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले पूचरा केसरा चैव जलजाचोपदेशिका सगजा कुलजा माला डाकिनी शागिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डागिन्यच्च महाबलाः ग्रगभूत पिशाचा च यक्षगन्धर्व राक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञः तेजोवृत्तिकरं परं यशसा वर्तदेशोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जभेत् सप्त
सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यच्छुरै अपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः इति श्रीवाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्या कवचं समाप्तं सर्वं जगदम्बा अर्पणमस्तु सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते।